Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the topics of our chapter number 2, vectors and equilibrium. We are going to discuss the vectors and its representation, and we will discuss the addition of the vectors. Now students, we are going to define the vectors. It has very simple definition. A vector is a mathematical quantity having both magnitude and direction. Now the examples are displacement, velocity, weight, acceleration, force, and so on. Now here is the symbolic representation of our vector. We use arrow on a vector. Here we have capital letter A, which is representing a vector, and we use arrow on it. So this is the symbolic form of our vector. Now for magnitude, we represent our vector in the mod. Okay, now this represents the magnitude form or the magnitude of our vector. Now this is the graphical representation of our vector. This is the vector A. Okay, now the length of the vector shows the magnitude of our vector or size of our vector, and it has an angle with the axis or with a particular line or sheet. So this angle represents the direction of our vector. Now this is the graphical representation. Okay, now students, we are going to define the Cartesian coordinate system. Simply we can define the Cartesian coordinate system as the axis system. Okay, or x, y, z axis represents the Cartesian coordinate system. Okay, now we can call it as the number plane system. Okay, now it consists of a horizontal line which is called the x-axis and a vertical line which is called y-axis, intersecting at right angle triangle, means 90 degree, at point O, which is called origin. Okay, now the x and y axes are usually drawn in the plane of the page, means x and y axis represents the two-dimensional plane, or a page or a sheet represents the x and y axis. Okay, now the z axis comes directly out of the page at the origin. Now this is the representation of the three axes x, y, and z. In this representation we can see that the three vectors are perpendicular on each other. Okay, now this is the representation of xy plane. In this representation, x and y axis are perpendicular on each other. Now students, we are going to represent the vector in our Cartesian coordinate system. Now we can simply represent it as in the 2 dimensions and in the 3 dimensions. Okay, now representation of a vector in a plane or in 2 dimensions. Now here we have a y-axis and we have x-axis. Okay, now x and y-axis represents the plane or two-dimensional plane. Okay, now here we have a vector like this. If we draw a perpendicular from the head of our vector, this line which is drawn from the perpendicular of our vector represents the y component of our vector, means this line which is drawn from the head, this head of our vector, this line which is parallel with our y-axis represents the y component of our vector. This is vector A, so the component represents
as the a y, or we can say it this is the vertical component. Okay, now this is the horizontal component, which is parallel or along the direction of x-axis, represents the horizontal component. Okay, now when we draw a vector on x and y plane or in two dimensions, it has two basic components. First one is vertical component and second one is the horizontal component. Okay, here we have a simple representation of vertical and horizontal component. Now representation of a vector in a space or in three dimensions. Okay, now what means space? Space means x, y and z axis. Okay, now here we have three axes. Now this is the x-axis, this is the y-axis, and this is our z-axis. Okay, now here we have a vector which is called vector A, now with brown color. Okay, now this vector is vector A. So similarly, as we have discussed here, when we draw our vector on xy plane, so we have two basic components with an angle also. Okay, now this is the angle, here is the angle which is called theta. Here we are going to discuss it. Okay, now the two basic components on xy plane, vertical and horizontal. So similarly, when we draw our vector on the three axes x, y, z, so we have three component of our vector. Like this is vector A, so we have three components, a y, a z and a x. Okay, now the component which is parallel or along the direction of x-axis called ax. Similarly, the component of our vector A, which is the along the direction of y-axis, represents the ay, and similarly the component which is along the direction of z-axis represents the az. Okay, now all these three axes have their angles alpha, beta and gamma. Okay, now our vector A is formed the alpha angle with x-axis, beta with y-axis, gamma with z-axis. Okay, now students, unit vectors, this is the very simple representation of our vector, or we can say this is the type of our vector. Okay, now we can simply define it as the dimensionless vector having magnitude 1 and used to represent the direction of a vector. Now this is the basically purpose of our unit vector. Okay, now is called the unit vector. Now I repeat it again, the dimensionless vector having magnitude 1 and used to represent the direction of a vector is called unit vector. Now we can write in mathematical form of our unit vector as, now this is the vector A. Suppose we have vector A is equal to magnitude of our vector A into the unit vector. Now this is the representation of the unit vector. We use cap on our vector. Okay, now it represents the unit vector, or this is the symbol of the unit vector. Now we can arrange it as the unit vector A is equal to vector divided by magnitude of vector A. Now by using this formula, we can simply define of our unit vector in terms of the mathematical, or on the basis of the this formula we can define mathematically as when we divide our vector with its own magnitude, so we have a unit vector. Okay, now here we are going to highlight the
graphical representation of our unit vectors. Now there is a key point, I, j and k with caps, means I cap, j cap and k cap represents the axis. Okay, means I cap represents the x-axis, j cap represents the y-axis and k cap is represents the z-axis. Okay, means ke x, y and z axis has their unit vectors in form of I cap, j cap and k cap respectively. Okay, now basically the unit vector represents the direction of the vector. So here is an example of our unit vector. Like we have a sheet here. Okay, now this is a sheet. अगर हम अपनी इस शीट की डायरेक्शन को शीट के सरफेस एरिया को अगर रिप्रेजेंट करना है, जिसको हम वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी डायरेक्शन कुछ ये है. ठीक है, तो ये जो यूनिट वेक्टर है ये इस शीट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये वेक्टर ए हमारा. अगर हम इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें तो ए कैप इसी डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल जिस तरह हमारा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इसी डायरेक्शन में, यानी एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं. तो जो यूनिट वेक्टर है वो है आई कैप, जे कैप और के कैप. बिल्कुल इसी तरह ये एक शीट है जिसके ऊपर जिसकी डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके सरफेस एरिया को हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं उसकी डायरेक्शन को. तो इसकी डायरेक्शन ए कैप कुछ इस तरह रिप्रेजेंट हो रही होगी. नाउ students, we are going to add the two vectors or more vectors. Now we have simple head to tail rule to add our vectors. Okay, now we are going to discuss the addition of our vectors. Now addition of two vectors. Suppose we have a vector A and a vector B. If we want to add these two vectors, so we will simple use the head to tail rule. क्या करेंगे हम अपने head to tail rule के अकॉर्डिंग, जो हमारा फर्स्ट वेक्टर है लाइक वेक्टर A, तो उसके हेड से सेकंड वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, नाउ सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हेड टू टेल रूल. ये हमारा फर्स्ट वेक्टर जिसके हेड से हमने अपने सेकंड वेक्टर वेक्टर B की टेल को ज्वाइन कर दिया. ठीक है, now final form is the representation of the resultant. Okay, now तो resultant हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है, इसकी टेल से अपने सेकंड वेक्टर या लास्ट वेक्टर के हेड पर हम अपने रिजल्टेंट को ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो जो रिजल्टेंट है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल से स्टार्ट होगा लाइक दिस, ये स्टार्ट हो रहा है, और इसका जो रिजल्टेंट का हेड होगा वो हमारे लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन होगा. सो दिस इज द रिजल्टेंट, मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर आर, which is the summation of these two vectors. A plus B represents the R. Okay, this is the representation of the addition of two vectors by using head to tail rule. Okay, now here we are going to add the vectors and we know that the addition of the vector is the commutative. means कि जब आप अपने दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, सपोज कि आपके पास एक वेक्टर B है और एक वेक्टर A है, इन दोनों को आपने लाइक ये जो ब्लैक में आपको यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है, वेक्टर B और वेक्टर A, आपने इन दोनों को ऐड किया तो आपको ये ब्लू रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है जिसको हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन रहा है R इज इक्वल टू B प्लस A. ठीक है, ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है. अब कम्यूटेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, कम्यूटेटिव ये रिप्रेजेंट करता है कि A को अगर हम पहले ऐड करें और B को बाद में रखें तो इससे भी जो रिजल्टेंट मिलेगा वो पहले कॉम्बिनेशन से सेम होगा, यानी B प्लस A जो है वो इक्वल होगा A प्लस B के. तो हम इसको बिल्कुल इसी तरह अरेंज कर लेते हैं. ये जो हमारा वेक्टर A है, इस वेक्टर के बिल्कुल पैरेलल एक वेक्टर उठा के हम यहाँ रखते हैं, लाइक ये जो रेड में डॉट आपको ये जो लाइन है इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है. ठीक है, ये वेक्टर A है और बिल्कुल वेक्टर B के पैरेलल एक वेक्टर B को अरेंज कर लेते हैं. ठीक है, नाउ तो ये जो A वेक्टर है और ये जो B वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट B वेक्टर R है. ठीक है, तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B
represents the vector r. ओके, तो सिंपल एडिशन ऑफ वेक्टर हमारे कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है, ठीक है, जो हमें कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a. नाउ एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स. नाउ अगर हमारे पास एक से ज्यादा वेक्टर्स हों स्टूडेंट्स, तो सिंपली हम उनको हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम अपनी इस फिगर में देखने जा रहे हैं. नाउ सपोज हमारे पास वेक्टर a, b, c और d हैं, ठीक है. हम इन चारों वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं अगर, तो अगेन फर्स्ट वेक्टर a उसके हेड से सेकंड वेक्टर की टेल ज्वाइन होगी, तो ये रहा सेकंड वेक्टर b, और फिर उसके बाद थर्ड वेक्टर उसकी टेल वेक्टर b के हेड से ज्वाइन हो रही है. इसी तरीके से जो लास्ट वेक्टर d है, उसकी टेल वेक्टर c के हेड से ज्वाइन हो रही है, ठीक है. अभी जो रिजल्टेंट है r, ये कुछ यूं रिप्रेजेंट हो रहा है कि फर्स्ट वेक्टर उसकी टेल से हमने इसको ड्रॉ किया और ये हमारे लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन हो रहा है. तो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d, ठीक है. तो ये समीशन है हमारे इन 4 वेक्टर्स का, ठीक है. तो हेड टू टेल रूल को ही यूज करते हुए अब हम अपने वेक्टर्स की एडिशन करेंगे, ठीक है. और ये रिजल्टेंट जो है वो कुछ इसी तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा जिस तरह हम अपने 2 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. Now students, we have a very simple type or another type of our vector which is called the null vector. Okay, now this is the simple representation. Now we can simply define it as the vector having zero magnitude. Now this is the zero magnitude, I explain it. Okay, now zero magnitude and having arbitrary direction is called the null vector. Okay, now student, जो हमारे पास वेक्टर है, हमें ये मालूम है कि उस वेक्टर का वेक्टर की डेफिनेशन ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है. अब मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ. अगर कोई हमारा वेक्टर जिसकी लेंथ 0 हो जाए, यानी वो एक डॉट रिप्रेजेंट हो रहा है, जैसे कि यहाँ आपको ये पॉइंटर नजर आ रहा है मेरा, ठीक है. तो अभी ये एक पॉइंटर है जिसकी लेंथ हम डिफाइन नहीं कर सकते, मीन्स कि ये एक डॉट है, इसकी लेंथ अभी 0 है, ठीक है. तो अगर एक वेक्टर को किसी एक्सिस पे डॉट लगा दिया जाए, कोई एक पॉइंट लगा दिया जाए, तो वो पॉइंट बेसिकली नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. यानी उसकी लेंथ अभी 0 है, तो वो नल वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है. अच्छा, जब इस वेक्टर को यानी इस डॉट को हम 0 मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर हम इस पर थोड़ा सा गौर करें तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी. इसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो सकती है, या किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है. तो इसीलिए हम इसको आर्बिट्रेरी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं. तो नल वेक्टर की डेफिनेशन ही यही है कि 0 मैग्नीट्यूड और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, ठीक है. नाउ we have simple points here for null vector. Such vectors are obtained by the addition, subtraction and cross multiplication of the vectors, ठीक है. ज्यादातर हम इनको O कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. For example, when a vector A is subtracted from itself, then we have a vector A plus minus vector A is equal to 0 और O कैप. ओके, सो ये हमारे पास एक वेक्टर, जिस वेक्टर को हम उसी वेक्टर में से, यानी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर सब्ट्रैक्ट कर दें हम, तो आपको जो वेक्टर मिलेगा वो नल वेक्टर होगा. नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्या करेंगे आप? नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 1. ऐड 5 vectors as the magnitude of their resultant vector is equal to 0. ठीक है स्टूडेंट्स, 5 vectors according to head to tail rule इस तरह से ऐड करेंगे कि उनका रिजल्टेंट जो हो उसका मैग्नीट्यूड 0 आ रहा हो, ठीक है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे.